Ladies and gentlemen, today we have with us our esteemed guest of honor, Mr. Dalip Tahil, respected Dean Student Affairs, Professor Rauf Iqbal Sir, Associate Dean Student Welfare and Hostel Management, Professor Utpal Chattopadhyay Sir, Professor Nikhil Mehta Sir, honorable faculty members and student participants. We gather here today to embark on a journey through an illustrious career of an artist who has graced the Indian cinema with his remarkable talents. Our guest for today hails from a serene town of Nainital, and his acting journey began at a remarkably young age. He attended Sherwood College, where he received the prestigious Geoffrey Kendall Cup for Best Actor. Today, we stand on the cusp of exploring the captivating odyssey of this versatile artist. It's our privilege to introduce this legend of Indian cinema, Mr. Dalip Tahil. His performances have enthralled audiences across generations. From the suave Mr. Madan Chopra, the mesmerizing antagonist from Baazigar, weaving his intricate web of suspense, to a devoted father, Mr. Harbhanlal Saxena in Ishq, and the unforgettable Mr. Dhanraj Singh in Qayamat Se Qayamat Tak. We have all been mesmerized by his performances, including the charismatic Johnny Bakshi in Dhan Dhanadan Gol, where he donned the hats of a crafty commentator and a football agent. Furthermore, his portrayal of the revered statesman Mr. Jawaharlal Nehru in Bhag Milka Bhag showcased his versatility. Not only that, but his presence in Made in Heaven adds a layer of veracity and gravitas to the show. His ability to seamlessly adapt to various characters is a testament to his remarkable talent and dedication to the craft of acting.
This is the magic of Mr. Dalip Tahil. He doesn't just act, he inhabits characters, making them come alive. We are deeply honored to have Mr. Dalip Tahil join us at IIM Mumbai for Cita Prerana. This event serves as a gateway not only to glean insights from their remarkable career, but also to explore the allure of unconventional paths to attain dreams. Since its inception, IIM Mumbai has been on a progressive path, hosting numerous visionaries, leaders, celebrities, and nation-building business executives. This year, NEETI has proudly transformed into an IIM, making this event even more exceptional as it marks the inaugural occasion hosted under the prestigious IIM banner, having embarked on a remarkable journey in the past while promising a bright future ahead. IIM Mumbai, formerly NEETI, was established in 1963 by Government of India, marks 6 decades of excellence this year. Celebrating its Diamond Jubilee, IIM Mumbai is currently ranked as 7th best B school across the nation as per the NIRF rankings. Without further ado, I now welcome you all to Cita Prerana, held under the banner of Avartan 2023. I would now like to invite respected Dean Student Affairs, Professor Rauf Iqbal sir, to felicitate our distinguished guest with a bouquet as a token of... Good afternoon. This is the first Avartan of IIM Mumbai, and the Cita Prerana is a very important event of Avartan, and Cita is the appointment, special appointment. So today we have the special appointment with Mr. Dalip Tahil sir. Sir, it's very movies I have seen him, all of you, right? So you cannot, I'm sure you cannot count how many movies you have seen Dalip Tahil sir, right? So I do not want to stretch my talk too much. I'm sure all of you, including me, are eagerly waiting to hear from you. So sir, over to you, sir. Thank you so much. All of them are working after surgery. Very good afternoon to all of you. I have to say thank you, first of all, very much for the lovely welcome that you all have given me and clapped for me so much. I don't usually get this kind of applause, but I'm very grateful for it, that you have been so kind enough to do that. I also want to take this opportunity to thank the Dean, the staff, and all of you for having been accredited with the IIM status after all these years, so that now you all will all have management degrees and go into the future. So without much and further ado, thank you very much for your introduction. And it's a pleasure to be here. I'm told that I'm the first guest to be invited at the time that you'll have this wonderful accreditation of being the IIM. So I'm extremely grateful. And it's an honor to be here. And I hope we will be able to interact, and please don't expect any gems of wisdom from me as far as management goes, because I have my social team managers with me. I'm pretty miserable at even managing my own life. So apart from that, we are open to share any of whatever I have experienced in all these years, which is a bit diverse, and I'm proud of that. So thank you very much once again, and I think we should continue with and start with what we have to do today. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I would now like to invite on stage Professor Nikhil Mehta, sir, who will be moderating today's session. I now request, sir, who serves as Associate Professor of Communication, Organizational Behavior and HRM at IIM Mumbai. He's a proud recipient of Bhattacharya Award for Student Development Activities by IIM Mumbai. Sir, the stage is all yours. Thank you so much. So very welcome to you here at the show.
and you're the first guest of our Avartan. Thank you. I don't think your mic is Am I working. audible? Yeah, thank you. So all of them came to IIM Mumbai because unke papa bhi kehte the ki bada naam karega. And he's the one, the first papa who said the naam bada karega. Big round of applause for sir. वो अलग बात है ना, आमिर ने अपना नाम बहुत बड़ा किया था. ऐसा नहीं है कि जिसको मैं बोलता हूँ वो नाम बड़ा करते हैं. लेकिन आपको मेरी तरफ से सब शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे अपने इंस्टीट्यूट के लिए और सबके लिए. Thank you, sir. So, sir, thank you very much for being here with us. And as you know, each one of us have our own journey, ups and downs, happy and vulnerable moments. And each moment give us some kind of an understanding to make meaning and, progress further. As I've been reading and searching and doing some kind of research about the kind of work, and I've been observing as well and watching, enjoying more or so your kind of work. It is pretty tough to play gray shades. I mean, the way it emerges because you're investing yourself completely into that to project how exactly it might be. So we would love to really understand those dynamics in today's, because as I had also mentioned that Cita is about and having an appointment, and we have added Prerana to that. That's an inspiration. So we have an appointment with our inspiration in so many ways, and so we would love to have some elements from you in today's session. So from where shall we begin? I see little Dalip in Agra. And Agra. Well, thank you for all this high praise. And well, I was born in Agra, but I didn't spend too much time there. Though recently when I went back, it was very funny because I went back after maybe about 45 years. मैं आगरा वापस गया, मैं एक शो के लिए गया था, और I was born in a military hospital. मेरे पिताजी वायुसेना में हुआ करते थे. तो जब उनकी आगरा की पोस्टिंग हुई थी तो मैं वहाँ पैदा हुआ था. मेरी जन्मभूमि आगरा है, लेकिन मैं ज़्यादा रहा नहीं वहाँ पर. लेकिन अभी मैं कुछ 8-10 साल पहले जब मैं वापस गया था आगरा में, तो उन्होंने कहा सर हम जिस बिस्तर में आप पैदा हुए थे वो हम अभी भी है 45 साल बाद ये अस्पताल में, which is not true, but I was very grateful to them for trying to they were being very nice to me. It was very unlikely that they're going to anyway. So that's why I was born in Agra. Right. Then in my background has been in an armed forces family. और आप लोगों को शायद आप वाकिफ होंगे, आई डोंट नो कि आर्म्ड फोर्सेस में हर 3 साल पोस्टिंग्स होती हैं, अलग अलग जगह में पोस्टिंग होती है. तो मैं अपने पिताजी के साथ जहाँ होती तो सारा परिवार उनके साथ जाता था. लेकिन मुझे इस वजह से कि माय एजुकेशन वुड नॉट सफर, आई वाज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल इन नैनीताल कॉल्ड शरवुड, एंड आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माय टाइम देयर. I went to Sherwood when I was about 9 or 10 years old, and I left when I was 16. So I spent my schooling in Nainital, in Sherwood. And I think the question you asked was about how one gets involved in this. In my case, I've always found that sometimes the way you're guided in your youth. जब मैं शरवुड में जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे क्वायर में डाला गया, क्योंकि that's the singing choir, and वो स्टेज पे आया करते थे. So I got from a very young age I found myself in school on stage. I was never in the audience, I was always on stage because the choir was performing for something, और schools में concerts होते हैं, informal concert होते हैं. तो हमें कुछ वो आइडिया नहीं था. वो सूट अपना जैकेट पहना के खड़े कर देते थे स्टेज पे परफॉर्म, और पूरा ग्रुप होता था. सो ग्रेजुअली आई गॉट familiar with the idea कि मैं I'll be on stage. That led to me being involved in the school plays, but I participated in other things also. ऐसा नहीं है कि I was only doing that. I played for the school football, cricket, hockey team, and I was just telling the Dean Sahab how important it is to have group sport for an all-round education
and an all-round, an understanding of how people work together, whichever, I believe, whichever field you're in, आप actor हो या आप management के students हैं, आप सबसे बड़ी companies को manage करेंगे. I think one of the most important things that I have learned in my life, and I've seen it in successful directors, लोग कहते हैं कि यार इसने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, इतनी सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन वो directors जो हैं, I've always found that their speciality has been how to be able to handle people. Personnel management, how to be able to get people to inspire people to give their best, to be able to get the optimum out of what a person is capable of. I feel that aspect of our lives, because it's not just in the professional field. आपके घर पे जो लोग या आप domestic help भी होता है, उनके साथ भी professional management करना पड़ता है, नहीं तो कल छोड़ के चले जाएंगे. So it's part of everyday life that we have to deal with each other and understand how we work together as a team. I lay a lot of importance on sport and group activities. I've just recommended to the dean that he puts some boats on the lake, taki, you can go out rowing and have a few quiet moments. And in my profession, it's not dissimilar to the rest of for the other professions. I started at a young age. I was lucky and fortunate. Lucky is not a word I like to use a lot because I don't believe too much in luck, to be very honest. My understanding has always been that your commitment and the amount of work you put in with honesty and integrity will always give you a good return. Now, when I return, I don't mean in business terms कि ये आपको मतलब actual मुनाफा होगा कि आप इतना डालेंगे, वो सब stock exchange और बाकी बातें होती हैं. I'm talking about a return for you personally as a human being. If you can tell yourself at any time कि मैंने यार अपनी तरफ से जो भी मैं कर सका मैंने किया है, तो अगर आप उसमें आप नाकामयाबी भी होंगे तो कोई बोलेगा आपको कि सर ये आपकी नौकरी, आई एम नॉट गिविंग यू दिस जॉब, ये नौकरी आपको नहीं मिल रही है, ये तसल्ली आपको हमेशा अपने पास होगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मुझे और क्या करना चाहिए. तो आई थिंक आई ले अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन self improvement, self realization, and in the fact that you have to invest your optimum capabilities to be able to do anything. It could be anything. It could be me getting up from here and going there, but I will look here and see am I not bumping into something. You have to be committed to giving your best. I think that is very important. I think I was fortunate in my life that I worked with in the theatre. मैं उसके बाद ये सब करने के बाद स्कूल के बाद मैं थिएटर में आया. I know you are wanting to ask me another question. ये बहुत बुरी आदत होती है एक्टरों की, आप उनको माइक दे दो तो छोड़ते नहीं हैं. Sorry, carry on. Please ask me some more. And I just wanted to inform everyone, and this is that time in terms of your inspiration that you started and putting up all of those efforts of even observing what's in front of you. It all began during the childhood when he was in the choir, and that's where he got consecutively 3 years Kendall Award for 3 years. Yeah, I mean, thank you for saying that. Yes, I did win the Actors Cup in school, but I didn't have that as a child. I mean, please believe me that ये नहीं कि मैं शुरुआत से मुझे ये commitment था, ये था, वो था, कुछ नहीं था. I was zero. मैं स्टेज पे आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मुझे एक्टिंग की प्राइज कैसे मिली. मुझे इतना मालूम था कि मुझे खूब मजा आ रहा था स्टेज पे, और मैं जैसे आप मैं बैठा था, उन्होंने अनाउंस किया कि आप बेस्ट एक्टर हैं. मैंने इधर उधर देखा, नहीं कहा नहीं तुम बेस्ट एक्टर हो. मैंने कहा ओ वेरी गुड. तो आई गॉट अप. सो इट्स नॉट कि हम मतलब पैदा ही होके हमें ये सब चीजें मानिए, कल्टिवेट करनी पड़ती है. देयर इज नो क्वेश्चन इन माई माइंड दैट यू हैव टू वर्क and be very decisive and be as focused as possible to develop these skills.
Nobody is born with these skills. लोग वो कहते हैं कि यार ये तो पैदाइशी एक्टर है. कोई पैदाइशी एक्टर नहीं है. मेरे लाइफ में मैंने एक एक्टर नहीं देखा जो मतलब पैदा होते ही मतलब उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया. ऐसी कोई बात नहीं है. इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन. जैसे आप लोग IIM में, हम भी थिएटर स्कूल में जाते हैं क्योंकि एक्टिंग के लिए एक तो आपके इमोशंस हैं. हम सबके पास इमोशंस हैं. तो व्हाट मेक्स मी डिफरेंट एज एन एक्टर? I think what makes me different is that I have a compulsion and an arrogance to think that जो मेरी सोच and what I'm thinking, I want to tell a lot of people. I can sit on stage while you all are watching. So there's a certain amount of arrogance and passion, and arrogance in a good way. There's arrogance. I don't mean the arrogance that you insult people or you humiliate people. मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं arrogance की बात कर रहा हूँ, which is a healthy emotion. You should have a little bit of arrogance in the sense that it says that I have the arrogance that I will be good at what I do. That is the arrogance I'm talking about. That is what leads to confidence. And there is, in my opinion, because I come from the theater, preparation is the key to success, in my opinion. Right. Yes, there are certain factors in life which will go against you. There are factors in life that will go for you. But the important thing is that you have to be prepared so that when the opportunity arises, you are prepared to be able to accept and use that opportunity. And it is an old saying, in my opinion, but it is a saying that has always remained with me. Try and try until you succeed. Practice makes perfect. लोग बोलते हैं कि अरे ये इतनी natural acting कर रहे हैं यार, ये कैसे करते हैं? ये लगता है कि यार इन्होंने, but there's no such thing. The more natural you see an actor on the screen, उतनी ही preparation उन्होंने की है उससे पहले, so that you're so relaxed with the material. Lines आपके दिमाग में, आपने 10 बार वो lines किए हैं. तब जब मौका मिलता है आप इतने मतलब इत्मीनान और इतने रिलैक्स्ड करते हैं कि लगता है कि साहब ये तो बहुत ही नेचुरल काम कर रहे हैं. बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन प्रिपरेशन. तैयारी करनी पड़ती है. आप म्यूजिक देखिए, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं लोग म्यूजिशियंस. वो रियाज करते हैं, घंटे भर रियाज करते हैं, 8, 10, 12 घंटे एक ही नोट पे. अगर सा है तो सा को 5, 10 घंटे के लिए सा सा ही कहते रहेंगे सरगम में. तो तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी. आपको तो उसका खैर आप इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में, लेकिन आगे भी जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो मैंने इस पे हमेशा महत्व दिया है कि मेहनत और प्रैक्टिस और प्लानिंग में ही लाभ है. नहीं तो क्या होता है कि ऐसी चीजें होती है दुनिया में, मतलब यू विल हैव अ लॉट ऑफ incidents where you get knocked around in this world. Nobody has a straight sailing life. भटकते हैं. The world, the life is known for giving you hard lessons. To survive those lessons, you have got to be prepared. You have to have that in me कि मैंने अपने तरफ से हर चीज की. मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, शायद मैं कामयाब होगा. लेकिन अगर वो डाउट होता है कि यार मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, तो उसको करो ठीक. Then you will be able to face the challenges of this world, in my opinion. It doesn't matter what you do. चाहे आप एक्टर हो, आप बिजनेस में हो, आप कहीं भी हो. That does not mean you don't have fun. You should also have fun. One of the good things that I emphasize in life is that you should have a rounded approach to life, where sport is equally important. Going out, relaxing, doing yoga, doing exercise, whatever it is you do. It is a balance in life that will reward you. Right, sir. And as you were talking about the kind of preparation that you said that you don't believe in luck. So I'm not going to use the word lucky, but yes, for sure, your preparation. And those preparations, you were like, you got an opportunity to work with the pearls of English drama. Say, Pearl Padamsi ma'am. That's right. Yeah. That's right. So I'd love to hear that experience and, how did Well, that's what I mean. I mean, मैं स्कूल खत्म करके आया तो मैंने एक प्ले किया था, तो मैं बॉम्बे आया. I was new in Bombay.
मैं 14 या 15 साल का था, मेरे पिताजी को यहाँ भी फ्लाइंग की नौकरी मिली जुहू एयरफील्ड में, तो इसलिए मैं हम सब बॉम्बे आ गए। तो मुझे कोई काम था नहीं। हमारे यहाँ होता था कि 9 महीने की स्कूल होती थी और 3 महीने की छुट्टी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मैं बॉम्बे आया और मतलब बोर्डिंग स्कूल के बाद तो एक ही, हर बॉर्डर के दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि खाना कहाँ है, खाना खाना है मुझे। तो 10 दिन के बाद मेरी माँ ने कहा, यार तुम कितना खा चुके हो, अभी कुछ जाके कुछ करो, मतलब मेक योरसेल्फ यूजफुल। तो मैंने डायरेक्टरी उठाई और वहाँ पर मुझे दिखा कि मैंने पूछा, मैंने प्ले करके आया था, तो मैंने कहा यार 3 महीने कोई यहाँ पर बॉम्बे में प्ले वे करते हैं कि क्या, उसी में चला जाता हूँ। तो पदमसी साहब का नंबर आया ना, आई जॉइंट देम। और वहाँ पर ये मैं वहीं से कह रहा हूँ कि तैयारी थी मुझ में थोड़ी सी। मैं गया था वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ऑडिशन लेंगे, जो एक्टरों को तो ऑडिशन ही देना पड़ता। तो मैंने शेक्सपियर का मैकबेथ किया था स्कूल में। तो मैं गया तैयार होके कि मैं मैकबेथ का स्पीच बोलूंगा, ये होगा। लेकिन जब पर्ल पदमसी मुझे मिली तो उन्होंने कहा, बेटा काम, एक बैग दिया मुझे, हम क्रॉफर्ड मार्केट चले गए। उस जमाने में शायद आप जानते हैं टाउन में क्रॉफर्ड मार्केट है। एंड शी बिगैन शॉपिंग फॉर द प्रॉपर्टीज फॉर द प्ले। और उस दुकान में उसने इतनी बार्गेनिंग की, क्योंकि थिएटर में पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने ऐसी बार्गेनिंग की, दुकानदार ने उनको कहा, मैडम मैं आपका प्ले स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो सब मुझसे डिस्काउंट मांगेंगे। फर्स्ट लेसन इन एक्टिंग वाज दैट कि आप, हाउ डू यू ब्रेक इट, आई एम जस्ट जोकिंग इन रियल लाइफ, बट you know, these are experiences that I've been fortunate to work with good people who, first of all, with Mr. Alec Padamsi, who's my guru, and Pearl, who my guru in the theatre, first thing they told me was, come on time. Please respect time, respect other people's time. If you give a time, please try to be on time. अगर आप लेट हो रहे हैं तो आज तो it's very easy, you have mobile phones, you should say, यार मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, मैं 10 मिनट लेट। It's a courtesy that will make you a happy person in life. Because when you respect other people's time, you will gain respect in life. You will gain respect for yourself. And it's always the little things in life that give you the ability and the confidence to do the big things in life. And there are cliched sayings, सबको मालूम है कि यार बूंद बूंद से सागर बनता है, you know that you take your first step, चलने के बाद ही लोग दौड़ते हैं, you know, but these are important things. Because you must understand कि it's the small things that you do to each other and to yourself, which is the foundation of what you will build as your character. And your character, in my opinion, should contain respect for other people, respect for yourself, and a commitment to be the best that you can be. Thanks, sir. And I think the 3 series of plays happened after that. Yeah, that's my career graph. I mean, I got opportunities because I was in the right place. I was in the theater. I got opportunities. वहाँ से अब this is the whole thing that I mean, I was working on stage. शाम बेनिगल साहब आए वो प्ले देखने के लिए, और उन्होंने वहाँ से मुझे अंकुर दी, पिक्चर दिया, तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस मिल गया. So, but what I'm trying to say is that these opportunities only come to you when you make an effort to work hard and be in the place where the opportunities will come, like you all are doing. You all have come to the Indian Institute of Management because you want to be ready for the opportunities that come to you in life. Am I right? Am I right? You cannot. I mean, I know half of you have gone to sleep, but you can wake up now and tell me that am I right or wrong? All right. Thank you. Just joking. So it is about that, in my opinion. I mean, I'm here. Yes, my career is in front of you. आप लोगों ने देखा. I mean, I've been fortunate enough to stay to last for close to 50 years in this profession, and that's the other thing. There are factors that go in your favor in terms of longevity in your profession. By that I mean that actors like me or हमारी पीढ़ी जो है, we are lucky. Lucky I only use in this way, क्योंकि
हमारे ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं पिछले 35 साल में. अगर आप देखें, from when I started in the film industry, from single screen has gone to television, from television has gone to multiplexes. अब तो आप फिल्म अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हो. I never dreamed that would happen. As a result of which, कि टेलीविजन आने के बाद हमारी जितनी भी पुरानी फिल्में हैं, अभी आप बाजीगर की बात कर रहे थे, बाजीगर तो 90s में आई थी. कुछ लोग मेरे ख्याल से आप में से या तो बच्चे थे या तो पैदा भी नहीं हुए थे. How do you connect with me? And that is technology, because आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा. So this has been a bonus for our generation in the past 30 years, 25 years, that in the history of the world, there has never been such a technological leap and such a technological advancement in the world that has happened before this 25 or 30 years in terms of IT and technology. So that has changed the way we think, it has changed the way we live, it has enhanced our lives, and in many ways, it also has red flags on certain things, which I'm no one to tell you, you're all aware of. But, so from that point of view, I suppose I have been fortunate that you all can see my old movies. Otherwise, you wouldn't know who I was. I mean, पुराने generation में it was very sad कि पुराने actors जो थे, they were such fantastic actors, they gave such fantastic performances, लेकिन उनकी फिल्में सब भूल गए हैं क्योंकि वो टेलीविजन पे नहीं आ पाई. Right, sir. So there are a lot of factors in this life that I really don't know the answers to it. I can't tell you कि ये करो तो ये होगा. I'm not here for that. I'm just here to share my experiences, and I made many mistakes, which is also part of life. But to get up after your mistakes and continue and introspect and look at yourself and be honest that I made the mistake, why did I make a mistake, what went wrong? These questions are important as you make your life. And the rest, of course, you are in a beautiful institute, you'll be qualified, you'll know everything about management, that's all part of the game. But at the end of the day, in my life, as you say, there have been opportunities. Some I've managed to take advantage of, some I've totally missed out on because of my foolishness. तो ये तो चलते रहता है. But I'm still in this profession after 50 years because I feel that, well, I really, I sort of look back and I say that I'm probably here because of the good fortune that I have. Like I say, those technologies so people remember my old films. And with the coming of OTT and the coming of this reinvention, this change of different kind of storytelling, as we say, Right. in today's world, somehow I have been able to fit into that groove as well. Maybe because of my background, maybe because of various other reasons that I don't know. Yeah. So that has been good for me, and I'm but I can't, apart from what I told you about hard work and commitment, I can't put my finger on one thing and say I've lasted in this film industry because of this. It's always a combination of factors. So Yeah. there we So are. we're talking about your journey, and of course, OTT media and all has come now. I'll take you back a little more to understand a little more in terms of what we can derive and make meaning to it. So then, Ankur. Yeah, Ankur was my first film. I was Shyam Babu came to me and said, अगर आप हेयर कट करेंगे तो आपके लिए एक रोल है, मैं हैदराबाद में फिल्म बना रहा हूँ. तो मैं हैदराबाद चला गया. तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप आइए. जी. तो मैं घर गया. मैंने कहा मुझे पिक्चर मिल गई है, मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ. श्याम बेनेगल साहब ने बुलाया मुझे. एट दैट टाइम श्याम बेनेगल साहब वाज नॉट द श्याम बेनेगल, उसकी पहली फिल्म थी. यूज्ड टू बी वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स या एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाया करते थे. ही वाज वेरी वेल नोन, ही वाज वेरी फेमस एंड वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हैदराबाद आइए, आपके लिए रोल है मेरी नई पिक्चर में. तो मैं घर गया. तो मैंने कहा मुझे फिल्म मिली है. तो मेरी माँ ने कहा ओके ठीक है, फिल्म मिली है. तो मैंने कहा मुझे हैदराबाद जा रहा हूँ. तो सबका एक्सप्रेशन एक ही था कि तुम हैदराबाद जा रहे हो, लेकिन कैसे जाओगे,
टिकट का पैसा कौन देगा, कहाँ से जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या है भाई, कौन सी फिल्म है ये। 3 दिन बाद श्याम बाबू के ऑफिस से एक साहब आए मेरे घर के दरवाजे पे, दहलीज पे। उन्होंने एक लिफाफा दिया, कहा दलीप ताहिल, मैंने कहा हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे में 2nd क्लास का ट्रेन टिकट था, स्लीपर टू हैदराबाद, और 200 रुपये वो लिफाफे दे वो एक्सपेंसेस के लिए जर्नी पे। तब मुझे मालूम पड़ा कि भैया ये अच्छा है, ये तो टिकट भी खुद दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं खाने पीने के लिए, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक आई शुड डू दिस। तो फिर जब मैं हैदराबाद गया, वहां पर अलाउंस मिलता था मुझे हर हफ्ते, शूटिंग भी थी 35 दिन की, उसमें से मेरा 10 दिन का काम था, लेकिन रहने की जगह मिली। तो मैंने कहा यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो काम करना चाहिए मुझे, आई शुड फोकस ऑन दिस, ये तो दिस इज अच्छी बात है यार, मुझे मालूम नहीं था कि फिल्मों में ऐसा सब होता है। Right, sir. So it was, I'm putting it in a light way, but these are things that allow you to understand कि अब मैं इसका कंपैरिजन क्या कि थिएटर में एक पैसा नहीं है, मैं कॉन्स्टेंटली ब्रोक, मैं थिएटर करते रहता था, हैड वेरी सक्सेसफुल प्लेस, लेकिन मैं वॉइस ओवर्स भी करता था उस टाइम, एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा कमा लेता था, सो आई कुड मेट्रो सिनेमा में अपनी गर्लफ्रेंड को मैं एक समोसा खरीद सकते, मतलब यू नो ड्यूरिंग कॉलेज वी ऑलवेज डूइंग दिस, थोड़ा थोड़ा जहां भी होता था हाथ पैर लगा के, मतलब थोड़ा सा पॉकेट मनी कमा लेते थे, बट वी वर ऑलवेज ब्रोक इन द थिएटर में, और वो भी बॉम्बे में, तो मतलब बट वी ट्राइड वॉइस ओवर करना, ये करना, थोड़ी सी मॉडलिंग कर ली अगर मौका मिलता था तो, एंड आई वांटेड टू बी एन एक्टर। मैंने कहा यार आई लव दिस जॉब, आई वांट टू बी ए प्रोफेशनल एक्टर। सो द अंकुर का इंसिडेंट मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दिस मोमेंट, घंटी बजी में बस, हाँ यार आई कैन मेक अ लिविंग डूइंग दिस एज एन एक्टर, इफ आई कैन गेट मूवी वर्क, अगर मैं फिल्मों में मुझे काम मिलता है तो आई कैन मेक अ लिविंग। सो इट वाज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हालांकि उसके बाद 6 साल तक मुझे कोई फिल्म का काम नहीं मिला, बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट it got me thinking that I can be a professional actor if I focus on it and concentrate on it. So it was it was an important juncture in my life. Right, and then we also saw you in a lot of advertisements in between, Bombay Dyeing, HM. That's what I'm saying. वो बीच में वो 6 साल अंकुर के बाद, जब मैंने सोचा कि मैं तो स्टार बन जाऊंगा, इसके बाद लोग आएंगे, मीडिया आएगी, कोई नहीं आया। It has to do with also the fact कि आज मेरा रोल ज्यादातर कट गया था उसमें, और हम प्रीमियर में गए थे, तो मैं एक फ्रेंड को ले गया था साथ में, इट्स अ ट्रू स्टोरी, और वो बेचारी सारी वारी मैंने ढच की सी केम विद मी, और मैंने कहा ये फिल्म मेरी रिलीज हो रही है, इसके बाद मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ, तो प्लीज कम विद मी एंड सी व्हाट अ बिग स्टार आई एम गोइंग टू बी। तो पिक्चर शुरू हुई, उसमें मेरा एक शॉट आया, बिगनिंग में पहले रील में एक शॉट आया, फिर पिक्चर इंटरवल तक आई, मैं था ही नहीं फिल्म में। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, तो इंटरवल में मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा आप सॉफ्ट ड्रिंक वॉफ्ट पियो, इसने कहा यस आई लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक। सो आई वेंट टू द लॉबी, तो वहां श्याम बाबू खड़े थे, शबाना आजमी थी, सब इंटरव्यूज दे रहे थे, अनंत नाग जी थे वहां पर, फैबुलस कन्नड़ एक्टर, साधु मेहर, ऑल दीज वंडरफुल एक्टर्स, सब इंटरव्यू दे रहे थे, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो मैंने श्याम बाबू से पूछा, मैंने कहा सर जस्ट मेरा एक ही सीन था उसमें, सेकंड हाफ में क्या होगा, ऑब्वियसली मेरे सीन्स आएंगे। तो ही पुल्ड मी असाइड एंड ही सेड दलीप, उस जमाने में मालूम नहीं था एडिटिंग क्या होता, हम थिएटर के लोग थे, थिएटर में एडिटिंग थोड़ी होता है, फिल्मों में एडिटिंग होता है, आप फिल्म में कर दे, वापस जाके किसी कमरे में बैठ के आपका रोल काट दे, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो I asked him, I said, sir, second half, he said, Dalip took me aside and he said, देखो ऐसा है कि we had to cut your whole track out, क्योंकि वो कहानी में जम नहीं रहा था। तो I was confused, मैंने कहा लेकिन शूट तो किया आपने, कहानी में नहीं जम रहा था, मतलब ये थिएटर में तो कभी होता ही नहीं है। Anyway, I was not, this is the courage of youth. I was not bothered about the fact that I was cut out of this movie. मुझे प्रॉब्लम था भी, इसको क्या बोलूंगा मैं, जिसको मैं ले आया हूं, कह रहा हूं मैं स्टार बनने वाला हूं, इसको क्या कहूंगा, क्या करना है अभी।
तो I don't know, I went back and I told her, I said, देखो मैं अभी डायरेक्टर से मिलके आई, पर मंगोला पिलाया मैंने उनको, फिर मैंने कहा देखो मैं डायरेक्टर से मिलके आया हूँ और डायरेक्टर बोल रहा है कि सेकंड हाफ में मेरा रोल इतना तगड़ा है कि मतलब लोग टूट पड़ेंगे मेरे ऊपर और बहुत मीडिया अटेंशन होने वाली है. एंड शी वाज अ फॉरेनर, शी वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, शी वाजंट फ्रॉम इंडिया. तो वैसे भी वो डर गई, शी सेड ओ ये सब होने वाला है. सो आई हाँ लोग टूट पड़ने वाले. डायरेक्टर ने मुझे बोला तो ये है. तो वी हैव टू चॉइसेस, या तो हम रहे सेकंड हाफ के लिए और ये सब हंगामा होगा उसके बाद, या तो 5 मिनट में हम यहाँ से निकल जाए, तो ये भी हो सकता है. लेट्स गो, आई डोंट वांट ऑल दिस हंगामा होगा. सेकंड हाफ शुरू हुआ, लाइट्स डाउन हुई, 2 मिनट देख के निकल गए वहां से. तो आई मीन it's been fun also यार. ऐसी मतलब there have been some incidents. तो उसके 6 साल बाद मुझे कोई काम नहीं मिला as a theater में करता रहा. And that's when I started doing ads. I did ads only to have an income. I had no money. My father was an Air Force officer, तो उनके पास उसने मुझे ट्रेन पास दे के दिया कॉलेज जाने के लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था. तो I had to, so modeling, voice overs जो commercials के लिए होते हैं, I did solely to earn some pocket money for no other reason. It was completely commercial and it helped me. So then I got a job after that in advertising. तो उसमें मैंने काम शुरू किया. Then after that I got Shan many years later. I heard you saying that Javed Saab recommended for the Shan. Yeah. ये भी एक है, this is another true story. तो I was by Lintas Advertising. Lintas means LINTS is Levers International Advertising Service, a very big advertising agency. उसमें मुझे फिल्म डिपार्टमेंट में काम दिया गया एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, और हम फ्रीलांस प्रोड्यूसर्स को फिल्में देते थे, ये एड फिल्म जो आप देखते हैं. तो मैं एजेंसी की तरफ से था. बहरहाल तो सॉरी व्हेयर वाज आई? Javed Saab. हाँ, तो लिंटस में देयर वाज अ कॉलीग ऑफ माइन called Seema Soni, and I'm taking her name because she's no more and I really respect her. She was a dear friend of mine. वो थी इस्मत चौकताई, का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, the famous Urdu writer who was in her time one of the first people to talk about women's rights, power to women. Her name was इस्मत चौकताई. अगर आपको मौका मिले तो उनकी किताबें पढ़िए आप, बहुत मजा आएगा आपको. तो उनकी जो बेटी थी वो मेरे साथ एडवर्टाइजिंग में काम करती थी और मेरे प्लेस देखती थी. तो एक दिन उन्होंने कहा मुझसे कि यू शुड, आपको फिल्मों में आना चाहिए. तो मैंने कहा एक तो फिल्म की है मैंने, अंकुर से अंकुर वाकुर भूल जाए, देखा ही नहीं है किसी ने. यू शुड बी वर्किंग इन मेन स्ट्रीम फिल्म्स. तो मैंने कहा आई लव टू डू मेन स्ट्रीम फिल्म, लेकिन मैं किसी को जानता ही नहीं हूं. आई डोंट नो हाउ टू डू. शी सेड डोंट वरी, मैं आपको जादू से मिला दूंगी. तो आई डिडंट नो हु जादू वाज. ऐसा हुआ था, शी कॉल्ड मी टू अ हाउस वन इवनिंग, शी वाज हैविंग अ गेट टुगेदर, और वहां पर नो लेस देन जावेद अख्तर साहब उसी गेट टुगेदर में आए. क्योंकि जावेद साहब तो इस्मत जी के सारे जितने भी राइटर्स थे, इस्मत चौकताई के सब फैंस थे. शी वाज अ फैंटास्टिक. तो उनके घर उनका आना जाना होता था. तो जावेद साहब आए, पार्टी चल रही थी. तो सीमा ने मुझे बुला के उनसे मतलब मुलाकात, परिचय करवाया. अरे आप मिलिए, ये दलीप है, ये जादू है, ये कह के निकल गई. तो मैं मिस्टर जादू को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है. तो मैंने फाइनली पूछा, मैंने कहा यार जादू जादू ये कह रही है. तो मैंने पूछा उनसे, सर आप बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा अरे मैं छोटा सा राइटर हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ. मैंने फिर भी पूछा, मैंने आप क्या लिखते हैं सर? राइटर हैं आप? कौन से राइटर हैं मतलब? अरे छोटी सी फिल्में लिखता हूँ, छोटी फिल्में लिखी. तो फिर मुझे लग रहा था कि यार ये तो फिर भी मैं एक बार मतलब बेवकूफ बन जाती तो और भी बढ़ा के मैंने उनसे पूछा सर कौन सी फिल्में लिखी हैं आपने? तो कहा यही दीवार, जंजीर, शोले, ये फिल्में लिखी है मैंने, शायद आपने देखी होंगी. और तो मैंने सर साहब गुस्ताखी माफ सर, सॉरी पैर वैर पड़े. मैंने कहा सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप
आप वही जावेद हैं जो सलीम जावेद के जावेद हैं। उन्होंने कहा हाँ सलीम साहब भी हैं। उस जमाने में लोगों को मालूम नहीं था कि जावेद सलीम जावेद एक आदमी है या दो लोग हैं। और राइटर्स की तस्वीरें, इसमें मेरा पूरा दोष नहीं है क्योंकि राइटर्स की तस्वीरें छपती नहीं थी उस जमाने में। एक होता था स्टारडस्ट, उसमें एक्टरों की फोटो आती थी और वो भी गॉसिप। तो हम राइटर्स को शक्ल से नहीं पहचान पाते थे। तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा, जावेद साहब ने मुझे कहा हाँ मैं वही जावेद हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि सीमा कहती है कि तुम एक्टिंग कर लेते हो, तुम एक्टर हो। तो मैंने कहा हाँ सर मैं प्लेस करता हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो इसी कहा फिल्म में काम करोगे तुम? तो मैंने कहा सर ऐसा है कि पैसे मिलेंगे। जावेद साहब ने कहा कि आई नेवर फॉरगेट दिस। उन्होंने कहा फिल्मों में ही तो पैसे मिलते हैं, वरना हम क्या कर रहे हैं वहां पर? झक मार रहे हैं हम यहाँ पर अगर पैसे नहीं मिलते। तो खैर बहरहाल तो उन्होंने मुझे कहा हम एक फिल्म बना रहे हैं। अगेन वो मेरी खिंचाई कर रहा था, छोड़ा नहीं। जावेद साहब की आदत है पुरानी। तो मैं एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ, उसमें अमिताभ बच्चन जी हैं। और शोले का नाम तो सुना है आपने? मैंने कहा हाँ प्लीज अभी बस कीजिए, इतनी खिंचाई मत कीजिए। तो देखा शोले के डायरेक्टर जो है रमेश सिप्पी, वो पिक्चर बना रहे शान। उसमें वो एक्टर है ना, सुना आपने? अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी जी, सुनील दत्त साहब, ये सब है। उनमें काम करोगे तुम? तो मैंने कहा सर डेफिनेटली मैं काम करूंगा सर। उन्होंने कहा ठीक है अपना नंबर दे दो मुझे। तो उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। मैंने वाकई वहां से सीमा के डेस्क से एक पेज पन्ना थोड़ा आधा खींच के, वो भी थोड़ा सा, मैंने कहा पूरा पन्ना वेस्ट नहीं करूंगा, आधा, उसमें मैंने अपना नंबर लिख लिया, जावेद साहब को दे दी मैंने। तो वो पार्टी में चले गए। ये हुआ 2-3 दिन बाद वो फोन्स होते थे, वी डिडंट हैव मोबाइल फोन्स, जो ब्लैक इंस्ट्रूमेंट होता था ना फोन का, वो डायल हेवी वाला। ये भी जमाना था जहां डायल फोन्स हुआ करते थे। आई नो यू मस्ट बी सेइंग कि यार ये कौन सी पीढ़ी से है, कह रहे थे फोन करते। एनीवे तो आई गॉट अ फोन कॉल अबाउट 3 days लेटर। और एक साहब थे फोन पे, वो आपको बुलाया। ये तो मैंने क्या यार कौन है, तुम मजाक कर रहे हो? रात फोन रख दिया मैंने। क्या बेहूदी बात है, बेहुदा है ये, कौन ऐसे ही फोन कर रहे हैं। तो कुछ 15 मिनट बाद फिर फोन आया। अब की बार इसने अपने मुंह से पान निकाल दिया था। तो कहा कि जनाब मैं राजन साहब बोल रहा हूँ, मैं रमेश सिप्पी साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ, जावेद साहब ने आपका नंबर दिया है, आप प्लीज कब आके रमेश सिप्पी साहब से मिल सकते हो? मैंने कहा यार मैं अब भी रेडी हूँ, कि मेरा घर उनके खार ऑफिस से नजदीक होता था, मैं भी वही बगल में रहता। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, अगर आप 1 घंटे में आ सकते हैं तो आप आ जाइए। मैं गया वहां पर और मुझे शान मिल गई। और मैंने सोचा भी नहीं था कि जावेद साहब कभी याद रखेंगे। इतना खराब इंट्रोडक्शन हुआ था इतने मशहूर और बड़े राइटर के साथ। तो मैंने सोचा यार ये क्या है, मतलब पूरा ये अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा था। मैंने सोचा ये इतना अच्छा मौका था, ये मैंने बिल्कुल खराब कर दिया, मुझे कभी नहीं रेकमेंड करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। राइट सर। और मुझे शान मिली। और ये भी रमेश सिप्पी साहब ने मुझे बुला के पूरी कहानी सुनाई, ये पूरा। और ये उनकी नजाकत और उनके ये इन लोगों का स्टाइल। और इतनी बड़ी फिल्म शोले बनाने के बाद भी उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ऐसा ऐसा है, आप करेंगे क्या? अब मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि ये लोग हैं जो तरक्की करते जिंदगी में, जो सबकी इज्जत रखते हैं। अगर रमेश सिप्पी साहब मुझे इतना भी कहते कि मेरा 3rd असिस्टेंट है बाहर, तुम्हारा ये रोल है, तुम कर रहे हो शान, मैं ना नहीं बोलता। लेकिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर बिठा के मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल इन लाइफ। यू नो, आप कोई भी हो, छोटा सा भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट एंड गेटिंग रिस्पेक्ट। So as play में पहले 3 wise men, one of the plays that you did. Then Ankur, you were one of the 4 friends, and then Shan, you were one of the 4. अभी शान शुरू हुई, मुझे मालूम नहीं था। पहले मैं बाहर आया रमेश जी के ऑफिस से, तो पहले मैंने असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा सर, सबने बोला अरे मुबारक हो आप शान कर रहे हैं, क्या बात है? उस टाइम पे तो सबसे बड़ी फिल्म बन रही थी वो। शान वाज द बिगेस्ट मूवी बीइंग मेड एट दैट टाइम, इट वाज वेरी बिग। तो साहब मुबारकबाद होगी सर, ऑफिस में क्या बात है सर, आप शान कर रहे हैं, शान कर। तो मैंने कहा थैंक यू। फिर मैंने एक असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा भैया ये तो सब ठीक है लेकिन मेरा रोल क्या है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा रोल?
तुम थिएटर के हो? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा रोल, अब आप उनसे जाके पूछिए, वो जो साहब है ना वहां पर बैठे हुए हैं लिख रहे हैं, उनसे पूछिए, वो आपका रोल बताएंगे। तो उनके पास गया मैं, ये रूमी साहब थे जो उनके ट्रांसलेट करते थे, जो उर्दू से, जावेद साहब हिंदी उर्दू में लिखते थे तो हिंदी में देवनागरी में लोग बैठ के मतलब उसको ट्रांसलेट किया करते, ट्रांसक्राइब। तो उसके पास गया, उसने भी मुझे देखा, चश्मा रखा, उनका अच्छा तुम रोल पूछ रहे हो? हाँ अच्छा अच्छा, उनके पास जाओ। तो मैं तीसरे असिस्टेंट के पास गया, जो हेड असिस्टेंट थे, जो मतलब ठक्कर साहब, जो रमेश सिप्पी साहब के मेन असिस्टेंट थे, और उनको ये सब मजाक वजाक करने का समय नहीं था। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सर मुझे ये फिल्म मिल चुकी है। देखा हाँ वेरी गुड कंग्रेचुलेशंस। तो मैंने कहा सर आप मुझे 2 मिनट बता सकते कि मेरा रोल क्या है? इसे तुम्हारा रोल ये है कि खार में तो वो दर्जी को जानते हो, न्यू स्टाइल हो, वहां जाओ, तुम्हारे लिए एक व्हाइट सूट बनाया जा रहा है, वो और तुम्हारे डुप्लीकेट के लिए अलग सूट होगा। इसका मतलब तुमको इतना अच्छा रोल मिल रहा है कि आपका और आपके डुप्लीकेट का सूट एक नहीं होगा। जाओ वहां नाप दो और कपड़े सिलवाओ और फलाने दिन पे सेट पे आ जाओ, ये तुम्हारा रोल। So you played Kumar in Shan. That was your character in Shan. मतलब वो उस टाइम पे वो जेम्स बॉन्ड किस्म की फिल्म बन रही थी, जी, तो शाकाल के 4 जो हेंचमैन जो उनके थे, जी, तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि भैया मैं तो थिएटर में सबसे मतलब लीड रोल्स कर रहा हूँ, ये मैं क्या कहाँ आके फंस गया हूँ। मैं तो मुझे अच्छे सीन्स मिले, वैसा था। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और दूसरी बात है जी, जी, कि शुरुआत मॉडेस्ट हुई, लेकिन इतनी अच्छे कंपनी में काम किया मैंने कि इतना सीखने के लिए मुझे मिला कि आई नेवर रिग्रेटेड इट। जी। और एक बहुत बढ़िया कहानी है। तो वहां पर हम 3 महीने थे फिल्म सिटी में, और हमें घुमाते रहते थे वो उस पे, वहां पर जिसमें वो मगरमच्छ का तालाब होता था। और जब भी शाकाल को गुस्सा आता तो बटन दबाता तो एक बेचारा हमारे साथ था सुधीर बगू। तो उसने एक दिन रमेश जी को कहा, रमेश जी प्लीज सर मैंने एक और फिल्म साइन की है और आप मुझे 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए या 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो मैं वो पिक्चर भी कर सकता हूँ। उस जमाने में शिफ्ट करते थे। तो रमेश जी को कहा अच्छा तुम्हें जाना है? मैंने कहा हाँ मुझे यार। नेक्स्ट डे उसको मगरमच्छ को खिला दिया बेचारे को कि ठीक है आउट जाओ, करो दूसरी पिक्चर जितना भी चाहते हो। Then your association continued with the CP Sahab, and then you went into doing Bunyad also. हाँ रमेश जी के साथ मुझे बुनियाद मिली, उन्होंने बुनियाद के लिए बुलाया, मुझे शक्ति के लिए बुलाया, विच वाज अ बिग एक्सपीरियंस। शक्ति वो बन रही थी उनके टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपका सीन है अमिताभ बच्चन साहब के साथ और स्मिता पाटिल के साथ, एक ही सीन है लेकिन इस सीन के बाद पूरी कहानी बदलती है। ये और एक एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी का। तो मैंने सोचा यार रमेश जी ऐसे बोल रहे, सारे डायरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि आप एक सीन करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मन में बहुत विश्वास था रमेश जी के, काम कर रहा था मैं उनके साथ, तो मैंने वो सीन किया। और मुझे अभी भी इतना मतलब फैन मेल आता है उस सीन के लिए, वो 1 सीन के लिए जहां वाकई पूरी कहानी बदलती है। तो वहां से मुझे मेरा एजुकेशन हुआ, मुझे स्क्रीन प्ले का समझ में आ गया कि रोल में लंबाई और लेंथ की बात नहीं है। आप पूरी फिल्म में हो, वहां पर आप पीछे बैठे हुए लाइक फर्नीचर, कोई आपको देखेगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कहानी में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, आप कहानी, आपके कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कैरेक्टर के बगैर ये कहानी नहीं हो सकती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो 4 सीन का हो 10 सीन का हो, कुछ नहीं। वहां मुझे स्क्रीन प्ले का समझ में आया, क्योंकि मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार एक सीन में कैसे हो सकता है कि पूरी कहानी बदल जाती। लेकिन जब मैंने शक्ति देखी और वो सीन देखा मैंने, तब मुझे समझ में आया कि बच्चन साहब का कैरेक्टर जो है सीन में बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, फिर मुझे बाहर जाके मेरी मर्डर करते हैं जो बैड पीपल है और इल्जाम उसके ऊपर डाल देते, पूरी कहानी पलट जाती है। स्क्रीन प्ले का तब मुझे समझ में आया कि इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि कहानी का जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि सर मैं सिर्फ एक सीन कर रहा हूँ या 2 सीन कर रहा हूँ। सर, और सर सेम मतलब एक्टर्स के साथ में जब हम रिवाइज्ड नई मूवी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुधीर पांडे जी सर के साथ में आपने शान में काम किया था, आपके वन ऑफ द कलीग्स विद यू, देन बुनियाद में भी थे आपके संग में। आमिर खान जी के साथ में आपने एक फिल्म में काम किया, कयामत से कयामत तक, एंड देन लव लव लव, इश्क,
So, how is it to experience the same actor when you're working in the different genre? I mean, somewhere contamination could change, कुछ preparation, कुछ rehearsal. वेरी गुड क्वेश्चन. तो कयामत से कयामत तक के बाद तो सुपर हिट पिक्चर हो गई, तो मुझे हर फिल्म में जहां भी आमिर था मुझे उनके बाप के रोल पे बुलाया जाता था. तो आप कह रहे थे ठीक. तो नेक्स्ट फिल्म जो हमने की तो हमारी कुर्सियां बगल में होती थी, और जैसे हम फिल्में करते गए तो जहां रुके थे तो हमारी सीट्स, वो वहां बैठा है आमिर, मैं उधर बैठा हूँ कि यार अभी ये हर फिल्म में, वो भी बोल रहा था यार ये हर फिल्म में मेरे साथ है यार. तो वो बम्बैया में बोलते हैं कंटाल आ जाते कि ठीक है यार ओके ओके थैंक यू. तो आई एम जस्ट जोकिंग दैट वे, बट वी वर्कड अ लॉट टुगेदर एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर. Right, right. Because Amir is a wonderful actor and a wonderful person. So I had actually learned a lot from Amir. Right, sir. About meticulousness, about being precise. He was very unhappy in most of the roles that he did after Qayamat Se Qayamat Tak. तो उसको मैं देखता था कि वो डायरेक्टर के पे क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. डायरेक्टर पागल हो जाते थे. उनको बोलना he was a hero, तो उसको तो समझाना पड़ता था. Until we came to Ishq. फाइनली इश्क में आमिर, इंदर कुमार जो डायरेक्टर जिन्हें राजा बनाई थी और इश्क बनाई थी, आप तो जानते होंगे, टॉप नॉच डायरेक्टर, वंडरफुल डायरेक्टर. लेकिन उसको बिगिनिंग से एंड में उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए. तो एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे और आमिर उससे पूछ रहा था लेकिन इंदु यार ये जम नहीं रहा है, मुझे कैसे ये कैरेक्टर कैसे होगा यार, इट्स नॉट साउंडिंग गुड. फाइनली इंदु टोल्ड हिम, हाथ जोड़ के बोला ऐसे, बाबा तू अपनी पिक्चर बनाना, तो अपनी पिक्चर में कर जो तेरे को करना, अभी मेरी पिक्चर में जो बोल रहा हूं वो करना, अभी छोड़ दे. एंड एक्चुअली आमिर आफ्टर दैट डिड लगान, क्योंकि वो स्टेज आ गया था वे इट वाज इम्पोर्टेंट. आमिर वाज एबल टू, ही डिसाइडेड दैट he is going to back his own vision. Right, right. And you were just 30 that point, and you were not even married to play the father's role at that When? time. When you did QSQT. When I did QSQT, I was about 31 years old. Right. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि नासिर साहब से कॉल मी, उन्होंने बुनियाद देखी थी तो उन्होंने मुझे बुलाया QSQT क़यामत से क़यामत तक, प्रोलॉग बताया, यहीं तक बताया कि ये आपके बहन के साथ ये सब हो जाता है, फिर आप वेडिंग डे पे उसको उड़ा देते हैं. मैंने कहा ठीक है ये फिल्म करूंगा मैं. तो बहुत ही डायनामिक एंट्रेंस है. नहीं यार सुन लो, पूरी फिल्म सुन लो. तो सो आई मीन you know Right. so it was part of that. Right. And then Bunyad, you're talking about Bunyad. I saw that helplessness on your face, in the dilemma between wife and then parents. Parents very emotional about not leaving the house, and then wife saying no, go ahead, and you being the thought. That was a screenplay, but I mean, Bunyad changed a lot of things for me because the role was of an honest IAS officer. मेरी माँ जिन्होंने मेरी उसके पहले फिल्में देखी थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा था, she was very happy with Bunyad. She said this is the role you should play. ईमानदार IAS ऑफिसर, अपनी बीबी की बात सुन रहा है, इस किस्म के रोल करने चाहिए तुम्हें. तो मैंने कहा ओके. एंड ऑल्सो द स्टोरी ऑफ बुनियाद वाज वेरी क्लोज टू माय मदर एंड फादर बिकॉज वी आर सिंधीज, और पार्टीशन के बाद माय पेरेंट्स हैड टू लीव सिंध एंड कम टू इंडिया. तो ये उस फैमिली के जो हवेली राम की जो परिवार था जिनमें हम थे, इट वाज वेरी क्लोज टू माय मदर एंड शी रियली लाइक्ड बुनियाद एंड माय फादर. शी यूज्ड टू बी वेरी इमोशनल अबाउट बुनियाद, क्योंकि ये हमारी भी कहानी, उनकी भी कहानी थी. सब छोड़ छाड़ के आ गए यहाँ पर हिंदुस्तान में. सो देयर आर certain things, certain roles that I've had the opportunity to play which have resonated very deeply with me and my family, and have also made a big difference in my life. बुनियाद के बाद वो थोड़ा मेरा इमेज ऐसे बोलते हैं, it became a little bit more softer. जब मैंने नासिर साहब से पूछा भी कि इतने बढ़िया रोल में क़यामत से क़यामत तक में आपने मुझे कहाँ ढूंढा, इतने एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स. मैंने बहुत एक्टर्स को बुलाया था, इसको बुलाया, नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इनको बुलाया. इन्होंने कहा हम इस उम्र में क्या आप कर रहे हैं नासिर साहब, इस उम्र में बाप कैसे बन सकते. तो उन्होंने इनकार कर दिया और वो मुझे मिल गया. मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं बाप हूँ, अंकल हूँ, आंटी हूँ, कुछ नहीं. मैंने कहा मैं रोल में ये करूंगा. और it was मैंने पूछा भी नासिर साहब से एक बार जब हम शूटिंग करें, मैंने कहा कहाँ से आपने मुझे कहाँ से सिलेक्ट किया. उन्होंने कहा मैंने आपको बुनियाद में देखा है. Oh, wow.
और मुझे चाहिए था कोई कैरेक्टर जो इमोशनल भी हो और थोड़ा स्ट्रांग भी हो. And we could see those emotions changing in QSQT, and even in your film graph from Shan, where we see you scared completely, where you the उस तरह आपके गालों पे लगा हुआ है, being very scared, and then we see you right now in Z's परछाई, where you are scaring others authoritatively, and even in सर ये तो स्क्रीन पे का कमाल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया. इट्स जस्ट दैट पीपल कॉल मी फॉर द राइटर को आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बिकॉज वी ब्रिंग ऑन द स्क्रीन जो राइटर और डायरेक्टर की दृष्टि है वो हम ले आते हैं. और but वो क्राफ्ट को एसिमुलेट करना सर, दैट्स एन एक्टर्स जॉब, एंड यू डू इट इज एन एक्टर्स जॉब, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आई एम एबल टू डिलीवर sometimes what has happened. But so how is this preparation done, sir, in these kind of transitions as an actor? What kind of preparation, what observations, well, how to make when you एक तो आपको कहानी में आपको मालूम है कि आप what is the story, what part of the story you have to represent, और फिर वो आप कैरेक्टर you give yourself a back story. आप अपने आप को बोलते बैक स्टोरी देते हैं. अगर आप कहें कि आप यहाँ हैं, आप फलाने हैं, तो मैं उस पर नहीं छोड़ता. ऑलवेज गो कि ये आदमी आया कहाँ से, क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड में क्या है. जैसे आप मुझे मेरी बैकग्राउंड का पूछ रहे हैं, तो यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट हिस्ट्री कि बिकॉज द एक्टर इज ओनली द टिप. जो आप देखते हैं इट शुड बी जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. उसकी जो लाइफ हिस्ट्री आप बनाते हैं अपने लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, वो दिखता नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन उसका जो बैक स्टोरी है, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर परफॉर्मेंस एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द वे यू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर. राइट. और सर इसी जंक्चर पे व्हेन योर बाजीगर हैपेंड, and then when Shahrukh Khan sir told you in the face that मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा हूँ, and exactly you could see that even the micro minuscule changes on the facial expression of yours and the craft that you presented in that moment, it was amazing. It was amazing. I mean, Thank you. Thank you. A big round of applause. Yeah, but thank you. Yeah. Thank you. So now as we talk about Baazigar, so I mean, it was just one of those movies which was fantastic to make. Abbas and Mustan bhai came to me and said, ये रोल है, एक नया लड़का है शाहरुख खान, उसको हम ले रहे हैं इस फिल्म में. और वो भी काफी लोगों ने रिफ्यूज किया था लीडिंग रोल, कि हम ये हीरो जो है लड़की को मार देता है, ये हम नहीं करेंगे, हमारे इमेज में सूट नहीं होता. फाइनली शाहरुख डिड इट. आई थिंक इट वाज ऑफर्ड टू आमिर एंड टू सनी. उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे इसके सबका रोल. एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज हीरोज डोंट गो किलिंग लीडिंग लेडीज, वो तो होता ही नहीं है. सो एनीवे दे केम टू मी एंड दे टोल्ड मी अबाउट दिस रोल. आई लाइक द रोल. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट. और फिर ये पिक्चर बन गई. मतलब अभी अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैंने बहुत बड़ी प्लानिंग की बाजीगर को सिलेक्ट करने में, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की. फिल्म केम टू मी, आई डिड इट. मुझे कहानी पसंद आई, बाकी सब ठीक था. अब्बास मस्तान इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, उन्होंने खिलाड़ी की थी. तो आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क इन इट एंड वो पिक्चर बन गई, बिकेम एन आइकॉनिक फिल्म. एंड तो इसमें मेरा कोई खास मतलब हाथ नहीं है. You're saying it very modestly. मतलब किरदार किया मैंने उसमें. I did a job. That is an amazing character, and my personal favorite is Bijlani's character that you Bijlani, played. Yeah. That was amazing, and you taught some business lessons to Amir Khan sir in the movie. You said, हाँ वो business में आपको नहीं बताना चाहूँगा. Which is like we were just discussing in the car में जब आ रहे थे, उन्होंने कहा सर Bijlani state तो does hostile takeovers. So I was giving an example of a hostile takeover. Godfather देखी होगी आपने, Godfather 1. आपने देखी है Godfather 1? Francis Ford Coppola's. तूने तो you've seen it because you were saying. तो Godfather 1 में एक बहुत interesting scene है beginning में, जब it's the wedding scene and Al Pacino अपनी गर्लफ्रेंड को ले आता है शादी के लिए for the ceremony. And he's sitting and talking to Kay Adams. And वो उसको कह रहा है कि
that singer comes, वो performer जो superstar singer है, वो उनके शादी में आता है and he's performing, he's singing a song. So his girlfriend tells him, I didn't know you know this huge singing star. So Al Pacino tells her that, look, he's my father's godson. और जब उसका करियर शुरू हो रहा था तो वो मेरे पिताजी के पास आया और उसने कहा कि मैं ये बैंड छोड़ के मैं बड़े बैंड में आना चाहता हूँ. तो my father went to the band leader and offered him $10,000 to release him. Band leader ने इनकार कर दिया. He said the band leader refused to release him. So he said that my father went back to him for an offer. Only this time he took Luca Brasi with him, who was the henchman. और उसने 1 minute में contract sign कर दिया. So she asks him, how did this happen? So he said, my father gave him an offer he couldn't refuse. He said, what was the offer? The offer was, either your brains will be on the contract or your signature. So she said, how did that happen? He said, my father took Luca Brasi. Luca Brasi held a gun at his head and said, either your brains will be on the contract or the signature. उसने $1,000 में उसने sign कर दिया. So I mean, that is a classic example of a hostile takeover. Right. Which I don't recommend, by the way. अब आप ये नहीं कहिएगा कि सारा तुमने कहा था ऐसे जाके करो मुझे जेल में डाल देंगे. But it's such a tough thing to place yourself in a negative and a gray shade to make others learn what may happen with the gray shade, sir. It's a great effort, and you're putting yourself in, investing yourself completely into those gray shades. At the end of the day, I'm sure when you go back home, there's a need to decontaminate yourself in several ways. And it's a nice word, decontaminate yourself. I don't really think I'm contaminated by that. yeah. But sometimes it's an issue which you have to deal with, because there are days and times when over a period of time, my mother used to tell me this when I was doing all the heavy roles of Marpeet, Dhar Dhod. I never thought twice about it. मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, मैं करता हूँ. I've got two sides of me. वो मैं करके आऊँ, मैं काम करके आऊँ. I've come home. She used to tell me, she said, you don't feel it now, but somewhere along the line, इसका असर तुम्हारे personality पे आहिस्ता 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 इसका प्रभाव होगा. I never believed her. And today, it's a conscious effort that what I do in my work, I have got a technique of how to leave it behind. And it's difficult. It's difficult because a lot of what you put into a character is a part of you. Somewhere there is a bank in you, an emotional bank in you. Somewhere there is something that you find which you add to the character, which is your perspective. Eventually, if you ask me to play a character, all this business about getting into the skin of the character is get into the skin of the emotion of the character. कि मैं situation में क्या करता. Unless there's like अब नेहरू जी का कर रहे तो फिर तो you look like नेहरू जी, and you got enough documentation. But otherwise, you're always giving a part of yourself into that particular scene or into that particular emotion. So there is an area where there is a sort of an overlap, and over the years you have to deal with it, and I've tried to deal with it the best I can. Sometimes I succeed, sometimes I don't. Sometimes people come to me and say कि आप स्क्रीन पे इतने खराब थे और रियल लाइफ में और भी खराब नहीं. I'm just joking. आप स्क्रीन पे इतने खराब थे लेकिन actually you're not so bad. आप तो I just think to myself, and so yeah, I mean, it's a gray area. I mean, it goes from person to person. I don't have any magic formula. I pretty much live my life. And I know one thing, that I can't carry my screen persona into real life. नहीं तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, मैं हाथा रोड में होता बिल्कुल 25 साल के लिए.
But I think this is something which is all of us go through in our lives that way, in terms of, we play different roles and different faces we've been carrying, and somewhere this craft all of us should know in so many ways. And you said that. Well, that's a very, very interesting question. When I started this conversation, I said that in any walk of life, you are playing different avatars. You are playing different aspects of your life. Tomorrow you'll go for a job interview after you finish your IIM. You will definitely go with a certain presentation that you have in mind. अगर आप इंटरव्यू के पहले घर पे बैठे हो चाय पी रहे हो चप्पलों में तो आप नहीं जाएंगे. You will not go like that. You will say, look, I need to be presentable. I need to conform with what the corporation would perceive me as perceptible for a certain interview. तो आप clean shirt पहनेंगे, you'll wear thing, you'll have a shave if you have to have a shave, you'll think, and you will go prepared. So in a way, they should include acting classes in the Institute of Management, so that, and in every aspect of human life, when you're dealing with people, you're trying to convince people, you're trying to talk to people about various things. There's always a question of it's not false, but it is something that you have to cultivate to be able to look into yourself so that you can bring that aspect out in you. Right. So in a way, it is you are being something that may not be your actual self while you're at home, is what I can say. Right, sir. So, we started with drama, stage, and then movies, and then there was 3D movie, first 3D movie in the country where you were the part of. मुझे वापस ही जाए, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ. So, was it different to put a craft in front of camera when you go for the 3D movie? 3D is probably for an actor, 3D is the most difficult thing you can do in the world. At least at that time it was, it still is. The problem, I'll just give you a technical thing about 3D. If you look into a normal camera like he's got here, it's a normal lens, you see one lens. आपको एक frame दिखता है. 3D में दो lenses. There are two horizontal lenses in the camera. And there's something called the force perspective. ये जो आप 3D में देखते हैं कि चीजें स्क्रीन से उड़ के आपके पास आ रही हैं, it's called the forced perspective. अब उसको करने के लिए you have to have the focus 100% right between these two horizontal lenses. Now, when you're shooting, अगर आप थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाते shot में retake करते, because the focus is super critical to get the force perspective. So it's very difficult for actors to shoot, and that too. I was doing it in Malayalam, which I don't know. मैं रात को रटता था dialogue, सुबह सारे dialogue भूल जाता था मैं, and I had to ratu it all over again. फिर ये कहते थे कि tight focus है, यहाँ मत जाओ, इधर मत जाओ. It was a nightmare. And then on top of that, it was in Cochin in the summer, where it was so hot that you couldn't think straight. So it was a very tough shoot. In fact, after I finished Kuti Chatan, it was a huge hit. That was very gratifying. After I finished the shooting of Kuti Chatan, I went straight to Bangalore to a health farm where I was detoxing and doing oil massages and mud baths and things like that, sauna thing, to unwind. So it was physically a very difficult film to shoot for an actor. But it was very rewarding because उस ज़माने में it was done by the great producer for Navodaya Studios called Avartan ji. We were shooting at the Navodaya Studios in the hills of Ernakulam. And he kept telling me every day in breakfast, it was a big breakfast, he kept telling me, I don't know how this picture is going to work. I don't know, it has gone so over budget. So one day I finally asked him, I said, so what do you mean by over budget in Malayalam? He said, well, if I have to take the famous Mammootty, who's the top star in Malayalam, ये picture 4 लाख में बन जाती है, 6 लाख रुपए में बन जाती. That is the amount of money we could spend if you have a superstar in Malayalam. My son, Jijo, has no stars in this movie. He has already spent 7.5 lakh rupees. और मुझे लग रहा है कि इसमें और 3-4 लाख रुपए होंगे. I don't know what's going to happen. We're going to go bankrupt. We will never get the money back. Finally, that movie was made in, I think, 10.5 lakhs, which was a disaster. Producer अपना बाल खींच रहा था
कि ये पैसे मुझे मलयालम टेरिटरी इज अ वेरी स्मॉल टेरिटरी, ये कैसे रिटर्न कैसे आएगा मुझे, हाउ विल आई गेट माय टेना. दैट मूवी मेड 12 crores Wow. in that time. I'm talking about 94, 84, no, 88. Quite early, 80s. Yeah, 80s, Yeah. mid 80s. Yeah. It made 12 crores in those days. Every language was a hit. So, I mean, there are things that happen that actually have nothing to do with me. So then, I was just the actor in the movie. Right. But it's the director's vision, it's the commitment of Jijo, his son, who went and made the first 3D film, selected a subject like almost Casper the Friendly Ghost, and had all these fun things happening. So look at the commitment of the director and his absolute belief that this movie would be a successful film. Right, sir. So with your kind permission, one more question from the past, and then we are moving forward to just one more question from the past. Yeah, If it's okay. You'll never allow me to forget my past. But there's so much to learn. We've been little I'm greedy, just sir. joking. Please go ahead. We are greedy. So there was one Raz Ki Baatein, and we want to listen about Raz Ki Baatein. There's a Dheere. Yeah, Raz Ki Baat, my background has always been the musical theatre. Yeah. जब मैं मतलब अंग्रेजी थिएटर में करता, I was doing musicals, musical dramas, which I also did one in London called Bombay Dreams with the famous legendary Mr. A.R. Rahman and the legendary Mr. Andrew Lloyd Webber. So that's always been my background. तो उस ज़माने में मैं एक musical play कर रहा था, तो one recording company came to me and said एक album बनाते हैं, अच्छा. तो मैंने एक album बना दिया उससे. Right. एक उसमें बहुत अच्छा, अभी भी मुझे कुछ लाइंस याद हैं उसकी, धीरे धीरे कहो सब. Would you like to say it? I don't remember it. Dheere, dheere, something like that was. Yeah. I'm sorry, it's a very old song. But it's just amazing. I don't remember it. It's a beautiful song, and you must all listen to it. Go to YouTube and Yes, is it on YouTube? Yeah, it's Oh, there. fantastic. I must listen to it then. Yeah, it's a beautiful song, and you must all listen, and you could, relate to that music because it's something this genre would really enjoy. So I'm sure I recommend strongly, and go and put the like button also in that and share too. And I should have met you about 30 years ago. Yeah. That's like very good PR for me. thank you so much, sir. Indeed, I'm still available. You just said. You just said opportunities have to be knocked in at any point. I might take you up on that. And I've taken it seriously. So, moving forward now, your Den Ferreira role and Abdul Qadir Khan's role. Yeah, that was when I went to do Bombay Dreams with Andrew Lloyd Webber and A.R. Rahman. So we did, Dan Ferreira was a character in EastEnders. EastEnders, I must tell you, is like the longest running show, one of the longest running programs. It's been on for the last 50 years and is very much part of the psyche of the British audience. So I was very privileged to get a role in that. It's produced by the BBC. So I did that, and that was very gratifying because I was playing to a mainstream British audience. From there, I got an offer for BBC Two to play the role of Abdul Qadir. Right. Abdul Qadir Khan, who was the person who created the nuclear bomb. The nuclear terror traders, nuclear technology for the Pakistani nuclear bomb in Kaho Naa Pyaar. And it was very interesting because at that time I was given declassified information from the BBC. They gave me a bundle this big and said, "You can't leave the office, but you please sit here." They gave me coffee, please sit down, and they gave me all the documents which were now declassified, of how the Pakistani bomb, the Kaho Naa Pyaar bomb, that Abdul Qadir Khan, how he went about doing this, which was fascinating because it had information in it that very few people know about, apart from of course the main agencies. And it was fascinating to read the story of this man who created
the Pakistani bomb, and why he did it, and what was the motivation, and the 1971 conflict between the whole region, the coming of the Russians came into Afghanistan, the Mujahideen, the whole political scenario was so fascinating that it was one of the roles where I really enjoyed doing the research. And there were a lot of things, and then the question that came to me was, the world was almost on the brink. Pakistan and India at that time, around 1985, were almost on the brink of nuclear war. We don't know that. And I was asking myself, what was I doing in 1985? I mean, yes, today even today as we speak, there is a huge crisis in the world, where in the Middle East there's a big war, there's a Ukrainian war. So I mean, very often we are today the news and the information is so much more. But in those days, I was thinking to myself, what was I doing in 1985 when we were literally minutes away from the possibility of a nuclear holocaust at this side of the world? Nothing. I was on stage singing and dancing. I was totally unaware that the world was in crisis. So, I mean, when you go back in time and you read these documents which the BBC had, it's quite fascinating to know how much common people are in the dark as to what is going on in the political world and the degree of misinformation. That today, of course, we have the Right to Information Act and we have hundreds of news channels, and I think after the Iraq war, with the coming of CNN, practically you could see the war live, which is horrifying. But I mean, the Iraq conflict in 2002 and 3, I mean, we were, even before that, in fact, the Kuwait conflict, we saw it live, virtually live on CNN. So I mean, this is the world today. This is where technology has brought us. That we can see a conflict like we are today, seeing the conflict in Gaza, and we're practically seeing it live. So, I mean, that was a fascinating role to play, Abdul Qadir Khan, and it was very well shot. I recommend it strongly. I think it's called. The overall program is called Nuclear Secrets. And there are 5 individuals that have been selected from history who were responsible for the proliferation of nuclear selling and working in the world. Because Abdul Qadir Khan actually sold the technology to the Iranians, to the North Koreans, all the people who have nuclear technology. Iran, I told you, he sold it to North Korea. The only person, now this is a very interesting thing. In the research that I saw, the only person that actually rejected Abdul Qadir Khan's proposal to transfer that technology was Saddam Hussein. Saddam Hussein didn't buy the technology. And his reason was that you're a Pakistani, you're a CIA spy. So I don't believe this technology is good. He was the only one who did not buy it. Everybody else bought it. In the open market, the Bazaar mein. The North Koreans bought it, the Iranians bought it, a whole bunch of people. Sir, I'm aware there's a paucity of time and we're greedy. Just 2 more questions before we, questions, yeah. So one is now from those times they're talking about horrifying wars and that space. Is a real life Dalip Tahil also who has come up with Sevenartpedia, your organization, your startup, your something to do with ideation of the company. I heard about that. I haven't heard about it. Okay, students have also advertised about that Sevenartpedia. So Sevenartpedia is not my company. I have no idea. Okay, to create some pool in terms of. No, nothing. Okay. Where did you hear about this? Students actually put it across on the social media as well. Must be someone else. Someone else in my with a similar name or something. But I have no such company. All right. And last question, over to the audience. Sure. I've told you the history of my life pretty much. So please, you're welcome to ask me any questions. In fact,
I wanted this to be a question and answer thing so that I don't keep on going talking about something that is probably irrelevant to you. I mean, I thank you very much that you're all sitting here and haven't run away. But I wanted this to be question and answer because I want to know what you all have in mind. Yeah, please go ahead, the young lady in front. Can you give her a mic? Can you please, tell us your name and that sort of stuff? Oh, sorry. Good afternoon. I'm Squadron Leader Babia Avartan. I'm from the Indian Air Force and part of the Defense Services batch here, Defense Officers batch. Wonderful. Really insightful talk, and we gained a lot of insights listening to you. One of the questions I want to ask you is as professionals, all of us are dealing with change. The technology landscape is changing, the social landscape is changing, and as a professional in your field, I just want to know how you were able to achieve that longevity with all the changes, whether it's technology or the social landscape, because a lot of times cinema imitates what's happening in society. So what are three quantifiable steps that you used in your career to adapt to change and to achieve longevity like you have? Thank you. That's a very interesting question. And I'm so glad you're a squadron leader because I grew up in an Air Force family and it's such a pleasure to hear a young lady in the Air Force. Congratulations for that and all of you. I thought I was telling Rao Saab that I think this is a fascinating program to help people from the armed forces when they come into civilian life to get an instruction and to get a sort of a kind of a knowledge of this nature to bring you into civilian life. Because I know my father, even he was a pilot all his life and he flew with the Indian Air Force. But then when he became to civil aviation, I wish there was a course like this because my father had a very tough time adjusting from the armed forces into civilian life because it is a change. I mean, there are dynamics and things that are very different. So congratulations to this institute and wonderful of you all to take the initiative to come here to prepare yourselves for civilian life because you will find a lot of changes. I think what the question you've asked is very individualistic. I would once again rely on your instinct, on your gut feel, the things that you have as value, the things that you have learned in the armed forces, which are discipline and everything to help you navigate this very difficult situation of technology changing, society changing. I think at the end of the day, I really can't tell you what to do. You have to back yourself with the values that you have that have been inculcated in you, and rely on your instinct and your training to be able to take you through this. As far as the technology is concerned, it's the simplest. I mean, you go to some place and you learn about the technology. Even I have learned about how to do certain things on the mobile phone that I never dreamt I would do. So that's a technical side. The emotional side is the difficult side. And then on top of that, you're a woman, I'm a man. We have totally different perspectives. There are different dynamics. But generally speaking, I can say since you have the training of the Air Force, go by your gut feel. Go by what makes you feel right. There's no substitute for that. Just if you feel good about it, if you feel right about it, do it. If you don't feel comfortable about it, don't do it. Does that answer your question? Yeah, sure. So, good afternoon, sir. I'm Leader Amit, and I am currently posted to Air Force Station Agra. So it's great to know that, and I'm still taking my son to MH Agra. So it was great to know that you have been born at that place. I might find some. I was told I was born there. I didn't see my anyways. So my question is, being a film star, you have a lot of commitments, a lot of official commitments, and how do you maintain work-life balance, sir? It is a very important aspect. How do you see? Thank you. Thank you. In fact, I wanted to, I'm so glad you brought this up because in the car we were discussing this. And I was thinking to myself, I said, what can I tell management students who know much more than me even now? I'll tell you,
And that's exactly what I was going to talk about, is that whatever field you're in, I think time management is crucial. How you sort your day out or your week out, or first you got to sort your mind out. So, I mean, I believe that it's time management. I might have 20 different things to do in the day. And it's always good to have help, like, people who sort of plan your day for you and help you with your day, because I have to focus on the job of acting. So I have a team that tells me, so-and-so time, so-and-so day, you're going to be here. So you have a diary, you have a commitment, you time manage. That's the only way that I can think of even dealing with the kind of pressures that there are and the kind of commitments that there are, is to time manage it. So it's literally, it's not rocket science. It's just you plot your day and say, okay, this is happening. Then you coordinate with your team and allocate the time that you have committed to that. So I think you have to focus on that more today than ever before. But I mean, are you from an armed forces background? Yeah, so I mean, they're the best people to tell you how to manage your day. I used to see my father in the morning, 7 o'clock, it was at the airfield. You go there, you do that, dang, dang, dang. Your whole day is chalked out for you. Use it in civilian life. It's that discipline of planning and understanding what your priorities are and how you plan your day. It may sound like a small thing, but it's very effective for your peace of mind as well. You're not in the wrong place at the right time, or vice versa. Last question. Yeah. Anyone? Yeah. Hi. You're audible. I think you are. Pleasure listening to you. So I have a very simple question. Sir, could you recommend 3 movies for all of us to watch? Top 3 movies that we all should watch. Yeah, I could. Very difficult. You asked me very difficult. Just 3 movies? I have hundreds of movies that you should watch. Now, I am going to recommend to you from local films. I liked a film called Aligarh, which Manoj Bajpayee did. Right. In my opinion, it is one of the greatest performances, which has gone unsung, but it is worthy of any award in the world. And I loved Aligarh because it has a conflict of a person who has different sexual orientations, and how he's in a place. So, I mean, I won't go into it. Aligarh is one movie that you must see. On the international level, recently I have seen. God, I can't even remember. I see so many movies. But I mean, I think you should see the classics. I mean, maybe you should see a film called Citizen Kane, which is an old film, but it's a classic. Godfather. God, there's so many films. Yeah, I mean, I'm sorry. Pink Panther. I love those comedy things, the comedy series, which are like Peter Sellers. Peter Sellers is an amazing actor to meet, to come back to. Mel Brooks's movies. I like a lot of comedies. I'm sort of a little off heavy dramas these days, though there are some really good ones. But yeah, you have Netflix today, so you can revisit all these lovely classical films. Right. So we come to an end, and the essence of the whole session is sort out mind, sort out time, work with discipline, work with commitment, work with dedication, seek opportunities, and explore the universe. So give to the world the best you have. I hope the best will come back to you. So thank you so very much for your. Well, hopefully, thank you very much. Thank you so much, sir. Nice meeting you, sir. Us. So we'll be continuing the session. More questions. Yeah, sure. No, not more questions. Thank you so much, sir, for an entertaining yet inspiring session. Thank you, sir. Personally, it was a pleasure to listen and learn from your diverse experiences, and I'm sure that the entire audience echoes the same. I would also like to thank Nikhil, sir, for seamlessly moderating the session. I now request Associate Dean Professor Utpal Chattopadhyay to present the vote of thanks. Thank you. It's very difficult to express the feeling that I have
in me, and I'm sure all of you have the same kind of feeling after attending this fascinating session with Dalip Tahil sir. In fact, some of our students were asking which three movies to watch. I will recommend you watch all the movies if you can. And the persons of my generation will vouch that we have grown up, sir, watching your movies. And the kind of entertainment you have given to us is unparalleled. And today, Sir, sorry, I'm sorry to interrupt you. If you have grown up watching my movies, where does that where does that leave me? and I have some personal memories, like son. I remember I skipped my school's classes and went to watch that movie. And I was caught by my elder sister in the same theater who also went with her friends. Then when I just left college and thinking what I would do in future, and those days Papa was very famous. And as a song, as a film, it was very, very good. And it's the best cast. Amir Khan, Juhi Chawla song was very good. And we used to also think really like I was in a challenging situation, what I'm to do in future and what my papa will think. But let me tell you, I didn't believe those days that one day I will discover my papa, though quite late in my life. Thank you, sir. I know time is very short. But then last comment, thank you, sir. I was watching this backdrop, sir, you have not seen it. So I see that from camera, this light is coming to Dalip Tahil. But I would say that maybe at the beginning, maybe the Ankur or the Shan. Today, the direction in the different direction. Today, Mr. Dalip Tahil has illuminated the entire Indian film industry. So the direction will be now in a different direction. Thank you, sir. Thank you for coming here. Thank you, Nikhil, sir, for making us very happy. And thank you, the students and the all audience. Thank you all. Thank you so much, It's been sir. an absolute pleasure to be here. I hope, since you're all still sitting, I suppose you weren't all completely bored. But thank you very much. It's been an honor to be here. And I wish you all every success in life. Thank you. Sir, we'll also like to present you a token of gratitude. I would like to request Professor Rauf Iqbal, sir, to join us on stage to present a token of appreciation in the form of a memento and a goodie bag to our esteemed guest. On behalf of the IIM Mumbai fraternity, I would like to thank our guest, Mr. Dalip Tahil, for sparing his valuable time to address our students, faculty members, and leaving us all in awe with his experiences. We hope that you continue to be associated with IIM Mumbai and give us the chance to host you again in future. I would also like to thank our director, Professor Manoj K. Tiwari, sir, and Dean Student Affairs, Professor Rauf Iqbal, sir, for their continuous efforts to nurture an excellent learning environment at IIM Mumbai. I thank the faculty members, the students who attended the session, asked their question and made it more fruitful for everyone. This event was coordinated by Prerana Management Group, a student committee of IIM Mumbai under the banner of Avartan 2023. With the permission of guest of honor, I request the organizing committee, IIM Mumbai Prerana Management Group, and participating faculty members to assemble on stage for a group photograph.
Yeah.